Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, here we see definition of orthogonal trajectory. We have recorded few video on orthogonal trajectory. Now we will read the definition and the working rule how to find the orthogonal trajectory. The word orthogonal means the right angle or 90-degree angle. Trajectory means a curve which intersects another curve or family of curves. Whenever a curve intersects a family of curves at 90 degree, we say that the curve is orthogonal trajectory. So let's read the definition. A curve which cuts every member of a given family at right angle is called an orthogonal trajectory. Now we read the working rule how to find the orthogonal trajectory for a given family of curves. This is the given family of curve of x, y, c is equal to 0. This c is constant. We can also say that c is parameter. So to find the orthogonal trajectory for this family of given curve, we will differentiate this equation. Here we see differentiate the given equation of the family of curves. Now here we have the constant c. Here we may have the constant c. Sometimes the constant here vanishes and sometimes we see the constant here. So here we have two equations. The given family of curve, this is one equation. The is corresponding differential equation, another equation. We have to eliminate c from these two equations. Eliminate c by using equation 1 and its derivative. This is our equation 1 and here we will have the derivative. After removing the constant from these two equations, we will replace dy by dx in the element by minus dx over dy. This will give us differential equation of the orthogonal trajectory. Here we will get the differential equation of orthogonal trajectory, then solve the differential equation to get the equation of the orthogonal trajectory. मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स होगा, वो हम डिफरेंशिएट करेंगे. फिर गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन से हम c एलिमिनेट करेंगे. जब c एलिमिनेट हो जाए तो फिर उसी इक्वेशन में हम dy by dx को रिप्लेस करेंगे माइनस dx और dy से, या उसके राइट साइड को हम नेगेटिव रेसिप्रोकल से चेंज करेंगे और फिर नया डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलता है उसको हम हल करेंगे. हल करने के बाद जो सोल्यूशन हमें मिलता है वो हमारे पास मतलूबा फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स है और इसी फैमिली ऑफ सर्कल के साथ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से गुजर रहे हैं. फैमिली स्ट्रेट लाइन का हर एक स्ट्रेट लाइन तीनों सर्कल के साथ 90 डिग्री पे मिल रहे हैं. लिहाजा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुए सर्कल का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है. हर एक लाइन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है और ये सारे लाइन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं.